Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are talking about one of the biggest threats to modern medicine, which is antibiotics and antibiotic resistance. Okay, it is also known as the superbug threat. So before proceeding towards the video, I just want to request to please like, comment, share and subscribe to my channel. I have made a very simple presentation. So in this presentation we are going to explore about how antibiotics work, why they are coming out as a superbug threat, what the future looks like for antibiotics, and yeah, about this. So make sure you watch till the end and don't forget to like, comment, share and subscribe. Okay, once again. So yeah, let's proceed. Let's get started. So moving forward, we are going to study about what are antibiotics. Okay, which is the basic of this presentation. See, antibiotics हम सबको पता है, they are medicines जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाई जाती है, ताकि बैक्टीरिया जो है उनका मल्टीप्लिकेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो है वो ख़त्म हो जाए, मल्टीप्लिकेशन रुक जाए, उसके लिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है. नाउ दे आर वेरी सिंपल मेडिकेशंस, दे आर वेरी इफेक्टिव एज वेल. सो उसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल कंज्यूम एंटीबायोटिक्स कि भाई फीवर है तो लेट्स कंज्यूम एंटीबायोटिक, और कुछ भी हो तो people consume antibiotics very easily, right? Is it so easy to just eat antibiotics and let your disease go away? Is it limited to that only? No, that is going to be the topic we are going to focus on today. See, antibiotics definitely are the medicines जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, and it reduces the multiplication of bacteria in the organism cell. They were one of the first greatest discoveries in medical history. जो स्टार्ट हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी से. पेनिसिलिन पे वो डिस्कवर कर रहे थे एंड ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स 1928 में. इट डेट्स बैक टू 1928. So thanks to antibiotics, pardon. So thanks to antibiotics, once deadly infections जैसे कि निमोनिया हुआ, wound infections हुए जो कि बहुत deadly थे एक टाइम पे, बहुत समय तक वो ट्रीट नहीं हो पाते थे, स्प्रेड होते थे, उसे इजीली ट्रीट किया जा सकता है. एंटीबायोटिक्स, you have to understand one thing, that antibiotics only work against bacteria. They do not work against any other kind of microorganism, be it virus, fungi or any other kind of microorganism. So eating antibiotics or antibacterial medicines against viral diseases or fungal diseases is going to be of no help. वायरल इन्फेक्शन जो कोविड है, फ्लू है, इसके लिए एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क. इट डज नॉट work even 1%. So वो awareness is very important, when to eat antibiotics and when to not eat antibiotics. People nowadays, and in COVID also, so in COVID there was a symptom of fever, so people were consuming antibiotics readily and rapidly. And nowadays also, when somebody gets fever, so people just does not want to know if it is viral, if it is a bacterial infection, or what kind of infection actually it is. People just consumes antibiotics and they just go away with it, which should we stop, because antibiotics do work against bacteria only. Okay, now how do antibiotics work? History of antibiotics we already have discussed, that discovery of penicillin से वो आया, originate हुआ. Antibiotic classes, उसके बाद antibiotic classes का development हुआ, and impact of global है on global health. जब देखा गया कि भाई बहुत डेडली डिजीजेस को ट्रीट करके ग्लोबल हेल्थ कहीं ना कहीं सिक्योर हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट उस टाइम पे इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, एज आई सेड. ओके, नाउ हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क? एंटीबायोटिक्स काम किस तरीके से करती है? सी, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, दे कैन किल बैक्टीरिया बाय टारगेटिंग इसेंशियल प्रोसेसेस. वो इसेंशियल प्रोसेस को टारगेट करके बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको वो रोकती है. दैट इज हाउ एंटीबायोटिक्स वर्क्स, राइट. कुछ बैक्टीरिया को उनका सेल वॉल बनाने से रोकती है कुछ एंटीबायोटिक्स, प्रिवेंटिंग देयर बिल्डिंग ऑफ प्रोटेक्टिव सेल वॉल. कुछ एंटीबायोटिक्स इस तरीके से काम करती हैं. कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो प्रोटीन मेकिंग मशीनरी को रोक देती हैं या डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देती हैं. तो कुछ एंटीबायोटिक्स उस तरीके से काम करती हैं.
Some antibiotics has a specific mode of action, so that's why doctors choose different drugs for different infections, right? There are so many antibiotics in the market, and antibiotics have the same purpose and application, that they are going to uh, stop the multiplication of the bacteria. That purpose is going to be same for every kind of antibiotic, but how it is doing it, that is different, and it is dependent on the disease, the individual, and so many factors. So that's why antibiotics should be prescribed only. It should not be available OTC, over the counter. That should be stopped. Okay, so I होप कि आपको समझ में आ गया हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क. सो दे वर्क बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स. कुछ सेल वॉल का सिंथेसिस रोक देती है. अगर सेल वॉल का सिंथेसिस ही रुक गया, सी सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया. अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बन पाई तो वो जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वेड कर सकता है, एंड कैन डील, इन कैन किल द पैथोजन, राइट. प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो गया. अगेन प्रोटीन सिंथेसिस इज वाइटल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी इट बैक्टीरिया, बी इट ह्यूमन. सो वो प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए मशीनरी ब्लॉक हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाता है तो द बैक्टीरिया कैन नॉट फंक्शन डेफिनेटली. मेटाबॉलिक इनहिबिशन, तो अगर मेटाबॉलिक इनहिबिशन ही हो गया है तो बैक्टीरिया करेगा क्या ना, मेटाबॉलिक फंक्शन ही नहीं चल रहे हैं. सो लाइक दैट. सो एंटीबायोटिक्स इस तरीके से काम करती हैं. ठीक है. Now there are several types of antibiotics, as I said. So दो कैटेगरीज में हम एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं. ठीक है. इट इज यूजफुल व्हेन द कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज अननोन टू द डॉक्टर. ठीक है. जब पता ना हो कि इन्फेक्शन क्यों हुआ है तो वो ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, जो ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को टारगेट करती है. कि भाई स्पीशीज वाइज वो होती है कि इस स्पीशीज में कोई भी बैक्टीरिया हो तो इट विल डू द प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं सफाइज करेगी सिचुएशन को. सो उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं. नैरो स्पेक्ट्रम ऑन दी अदर हैंड बहुत प्रिसाइज होती है और वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को टारगेट करती है. जैसे कि some antibiotics are there जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती हैं, जिसको हम बैक्टीरिसिडल बोलते हैं. ठीक है. सो दे आर बैक्टीरिसिडल. कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होती हैं जो ग्रोथ को स्टॉप करती हैं. सो दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक. ओके. सो दीज आर some of the types or some of the categories how we distinguish antibiotics. Broad spectrum versus narrow spectrum. Broad spectrum जो wide range of bacteria को जो target करती है जो medicine, that is broad spectrum antibiotic. जो narrow range को यानी कि एक ही specific bacteria को target करती है, एक ही species को target करती है, वो narrow spectrum antibiotic होती है. Another classification is bactericidal and bacteriostatic. एक type of antibiotics होती है जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देती है. एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है. सो जो ग्रोथ को रोकती है उसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, जो किल कर देती है उसे हम बैक्टीरियोसिडल बोलते हैं. सो दिस इज हाउ एंटीबायोटिक्स कैन बी क्लासिफाइड. मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब क्रिएट होता है, तब हो जाता है जब when bacteria evolve and become stronger than the medicines designed to destroy them. So that is why it is said कि antibiotics should not be taken very easily. Because क्या होता है कि हम अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, है ना, इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, और उसका वो मैकेनिज्म ही नहीं है, वो उस तरीके से उस बैक्टीरिया को ट्रीट ही नहीं करेगी. बट वी आर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, इट हैज़ द सेम पर्पस टू स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. तो व्हाट हैपेंस इज बैक्टीरिया इसमें अगर एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं वीक है और वो डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पा रही है तो वो बैक्टीरिया इवॉल्व होता जाएगा. एंड इवॉल्व होते 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 उसका इम्यून सिस्टम पे, ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम पे अच्छा खासा हैंडल हो जाता है. देन व्हेन बैक्टीरिया बिकम्स इवॉल्व, एंटीबायोटिक्स के खाने पर भी कुछ नहीं होता है. दैट इज व्हाट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीन्स कि एंटीबायोटिक एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है बैक्टीरिया, बिकॉज वो इवॉल्व हो जाता है. वो अगर आप कोई एंटीबायोटिक उसका सेल वॉल सिंथेसिस रोक लेती है तो इट विल फाइंड अ न्यू वे टू क्रिएट द सेल वॉल. उस तरीके से वो फंक्शन करता है. सो बैक्टीरिया का अगर इवॉल्व हो गया एंड एंटीबायोटिक्स बिना सोचे समझे ली गई, बैक्टीरिया इवॉल्व हो गया, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रिजल्ट करता है. So this means that infections that were once easily treatable can become dangerous or even deadly.
ओके वो कोई भी डिजीज हो सकता है जो कि एक प्रॉपर आपका एंटीबायोटिक से सॉल्व हो रहा है, इट कैन बिकम डेडली एज वेल अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया बॉडी के अंदर तो. So, there's this World Health Organization. It's a big organization. So they have called antibiotic resistance one of the top global health threats. So it is not a joke. It's like serious global concern. Now, how do bacteria becomes resistant? What are the causes? Bacteria resistant हो कैसे जाते हैं? See, bacteria or any kind of organisms are incredibly smart and adaptable, right? As humans are. हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एडेप्टेबल होता है. अगर कहीं पे भी उसको एक छोटा सा भी लूप होल दिखा तो वो अपने आप को एडेप्ट कर लेगा, उसके लिए इवॉल्व कर लेगा, ठीक है, ताकि उसको कोई ओवरकम ना कर पाए. सो बैक्टीरियाज कैन म्यूटेट. वो म्यूटेट हो सक म्यूटेट यानी कि फटाफट चेंज हो सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, म्यूटेशन ला सकते हैं अपने जेनेटिक मेकअप में फटाफट. उनका जेनेटिक मटेरियल वो चेंज कर सकते हैं. सी दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो इट इज़ वेरी easy for them to change their genetic material, and in a very small time. They can pick up resistance genes from other bacteria. जो दूसरा बैक्टीरिया है उससे वो resistance gene carry कर सकते हैं, and they can adapt that resistance gene अपने अंदर. So that is how bacteria are very smart. So they might pump out antibiotics, destroy them with enzymes. अगर मान लो बैक्टीरिया ने वो जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हो उसके अगेंस्ट एंजाइम बना ली, so bacteria will nullify the work of enzyme or the reaction of antibiotic with the enzyme. So that is how antibiotic resistance is created. जब बैक्टीरिया इवॉल्व होता है, एंड बैक्टीरियाज आर इनक्रेडिबली स्मार्ट बिकॉज देयर जेनेटिक मेकअप और देयर machinery is not very complex. They have a very easy machinery, so it is very easy and fast for them to convert their genetic material, to change their genetic material, to pick up any resistance gene. ठीक है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं. सी दे डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट, तो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो होती है वो अटैच ही नहीं हो पाती उस पर. सो दैट इज हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड इन अ बॉडी. सो दिस मेक्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू किल द बैक्टीरिया विच gives rise to these superbugs. इसी को हम superbugs बोलते हैं because once the bacteria evolves and it is not treatable with the help of antibiotics, then we have no solution to deal with that bacteria. So that is why it is a serious concern and it needs to be prohibited completely. So इसका रीजन क्या क्या है? ओवर यूज इन ह्यूमंस, एज आई सेड, लैक ऑफ अवेयरनेस. लोगों को पता नहीं है, बट लोग पीपल आर जस्ट टेकिंग एंटीबायोटिक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, एंड दे हैव, आई थिंक दे डू हैव दिस प्लेसिबो इफेक्ट, जिससे उन्हें लगता है कि नाउ वी आर करेक्ट एंड फाइन. बट इट इज़ नॉट राइट टू यू ओवर यूज एंटीबायोटिक्स, कि आपको थोड़ा सा कुछ है तो आप यू कैन टेक एंटीबायोटिक. इट्स नॉट गुड. मिस यूज इन हेल्थ केयर में उसका बहुत मिस यूज होता है. There are certain famous antibiotics there in the market जो कि कोई भी OTC है, they are available over the counter. Anybody can purchase in whatever quantities they want. So वो कहीं ना कहीं उसका misuse, overuse हो रहा है. Livestock overuse, antibiotics are also given to livestock पॉपुलेशन, तो वहाँ पे भी उसका ओवर यूज हो रहा है. देन पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, पुअर सैनिटेशन के वजह से भी रेजिस्टेंस जो है वो कॉज हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा, अगर मैं आपको फैक्टर्स बताऊं तो दे आर ओवर यूज इन ह्यूमंस एंड मिस यूज इन हेल्थ केयर. दिस इज the major reason behind the antibiotic resistance. Because अगर without prescription antibiotics ली जा रही हैं, courses complete नहीं कर रहे हैं, so if it is prescribed for 3 days says, right, 3 days के लिए उसको क्यों prescribe किया है? Because in 3 days it is going to kill the bacteria completely, or it is going to evade the bacteria completely out of your system. But people just people just feel good and they just leave it behind. So that is how bacteria, because bacteria अभी भी weakened form में present है, and if you stop the course of antibiotics in 1 day 2 days से, and अगर आपको 3 दिन के लिए prescribe किया है तो वो bacteria evolve हो सकता है उस तीसरे. So that is how this works. Antibiotics for viral illnesses, people do not
No, lack of awareness, as I said. People do not know if it is a viral infection or bacterial infection. So they just check it with, consuming antibiotics, which is extremely dangerous. Okay, people should not do that. In agriculture also, as I said, antibiotics जो है animal growth को speed up करने के लिए use होता है, which is again contributing hugely to the problem. Hospitals, poor hygiene, environmental contamination, ये सब भी resistance को spread करता है, right? Now, what are the mechanisms of resistance? See, bacteria use multiple strategies to survive. सबसे पहला है enzymes. Enzymes क्या करती हैं? They have these enzymes जो कि एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. जैसे कि बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम है एक, तो वो उनके पास होती है एंड दे when these enzymes get activated in their system, they can kill the antibiotics. They can nullify the effect of antibiotics completely. Efflux pumps क्या होते हैं? They push the antibiotics out of the cell. अगर आपने एंटीबायोटिक खाई and if that antibiotic reached the cell, वो efflux pump जो बैक्टीरिया का जो फंक्शनिंग होता है, वो efflux pump इस तरीके से होता है कि वो एंटीबायोटिक को सेल के वापस बाहर भेज देता है. चेंजिंग टारगेट साइट्स, सो द एंटीबायोटिक कैन नॉट बाइंड. ठीक है, टारगेट मॉडिफिकेशन, जहां पर आकर एंटीबायोटिक बाइंड करेगी, स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेते हैं बैक्टीरिया अपना, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सो इट बिकम्स इजी फॉर देम टू चेंज देयर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है वो सही प्लेस पे आके बाइंड नहीं कर पाते हैं. बायोफिल्म फॉर्मेशन होता है कम्युनिटी ऑफ बैक्टीरिया अगर वहाँ इकट्ठा हो गए. कम्युनिटी अगर बहुत ज़्यादा कॉलोनी इकट्ठा हो गई बैक्टीरिया के उस जगह पे, सो एंटीबायोटिक्स के लिए उसको किल करना बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग. सो बायोफिल्म्स प्रोटेक्ट्स, दे फॉर्म दिस लेयर आउटसाइड देम कंप्लीटली. कॉलोनी के बाहर वो एक लेयर बना देती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है. So these mechanisms make infections difficult to treat and sometimes untreatable as well. Moving forward to superbugs. See, superbugs again, as I mentioned कि वो बैक्टीरिया ही हैं जिसे हम superbugs बोल रहे हैं, जिन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को क्रिएट कर लिया है, वो उसे ही हम superbugs बोल रहे हैं. Some of the most dangerous forms includes MRSA, MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Second is CRE, Carbapenem resistant Enterobacteriaceae. VRE, vancomycin resistant enterococci. These infections can spread in hospitals, they can spread in communities and even through travel as well. Okay? Now, what is their impact on healthcare? See, antibiotic resistance के बहुत huge consequences and because it's a global concern also. So, understand how big of a threat it is. सो सबसे पहले तो है इंक्रीज डेथ्स फ्रॉम प्रीवियसली ट्रीटेबल इन्फेक्शंस. जो ऐसे इन्फेक्शंस थे जो आराम से ट्रीट हो जाते थे, वहाँ उसकी वजह से बिकॉज अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ गया तो डेथ्स जो है वो बढ़ रही हैं. हॉस्पिटल स्टेज बढ़ रहे हैं बिकॉज ट्रीट ही नहीं हो रहा है अगर कोई डिजीज, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू रिजल्ट इन लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज. एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेंसिव हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंड लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस रह गए हैं. बहुत सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं टू ट्रीट दी patient. So if resistance continues to rise, even small injuries and routine surgeries could become dangerous again. Okay, so this needs to be stopped. Antibiotic stewardship. So to slow antibiotic resistance, antibiotic stewardship की ज़रूरत है हमको. Antibiotic stewardship क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ. So there are several rules in antibiotic stewardship. First is antibiotics तभी खाना चाहिए जब ज़रूरी हो. Use antibiotics only when it is necessary, when it is prescribed, when it is being told to you कि ये खाना चाहिए आपको. Second is right antibiotics को चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड कि उनका अलग अलग फंक्शनिंग होता है, अलग अलग मैकेनिज्म होता है टू डील विद द बैक्टीरिया, टू किल द बैक्टीरिया. सो चूजिंग द राइट एंटीबायोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग द करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या डोज प्रिस्क्राइब किया गया है, कितना ड्यूरेशन के लिए वो खाना है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. एंड परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग. प्रिस्क्राइबिंग के पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए इफ इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इट्स अ वायरल और फंगल और एनी अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन. सो वो चीज़ कंफर्म होनी चाहिए. सो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग द एंटीबायोटिक्स. ठीक है.
So hospitals worldwide are adopting stewardship programs to ensure responsible use of these antibiotics. Okay. Now there are, some modern alternatives of this resistance. So researchers are developing new alternatives to antibiotics. फर्स्ट इज फाज थेरेपी. फाज थेरेपी में क्या होता है, वायरसेस को यूज किया जाता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है, वायरस को यूज किया जाता है दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो फाज थेरेपी इज वन. सेकेंड इज क्रिस्पर बेस्ड एंटीमाइक्रोबियल्स. तो क्रिस्पर बेस्ड एंटीमाइक्रोबियल्स में क्या किया जाता है, जीन एडिटिंग टूल्स को यूज करके रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को किल किया जाता है. जीन एडिटिंग टूल्स यूज करके जो ऐसा बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है उसे किल किया जाता है. देयर आर दीज एंटीवायरलेंस ड्रग्स. जो डिसेबल्ड बैक्टीरिया है, सॉरी जो बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है उसको डिसेबल कर दिया जाता है विदाउट किलिंग देम. तो वो डिसेबल हो जाते हैं एंटीवायरलेंस ड्रग से. नैनो पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है. सो दे आर नैनो पार्टिकल्स. सो दीज कुड बिकम द फ्यूचर ऑफ इन्फेक्शन ट्रीटमेंट. दे आर करेंटली इन द रिसर्च पार्ट एंड डेफिनेटली इट कैन कम in light. So what are the global measures which are taken to fight resistance? So first of all, the organizations such as WHO has created a worldwide action plan. ठीक है, countries जो हैं, global countries, developed countries, all kind of countries monitor resistance strains through surveillance programs. Hospitals जो हैं वो strict hygiene and sanitation protocol follow करते हैं. And public awareness campaigns definitely is on the rise. ताकि awareness फैल सके, लोगों को समझ में आ सके that when should people take, when should people not take, what to opt, what to not opt. So वो चीजें, so this is a fight we must tackle together. Okay, how we can help? See, every one of us can help slow antibiotic resistance because every one of us takes antibiotics, right? So first of all, never take antibiotics for viral infections. So again, diagnostic testing is important. You have to know that वो viral है कि bacterial है कि किस तरीके का infection है. Never take antibiotics for viral infection because it is of no use. Antibiotics never treat viral infections. There are antiviral drugs who treat, who can treat viral infections. Never self-medicate. आप खुद से ही अपने को ड्रग्स प्रिस्क्राइब मत करो. डू नॉट टेक ड्रग्स ऑन योर ओन. आप खुद से ही ड्रग्स मत लो. इट्स ऑलवेज गुड टू go to a doctor and take advice of a doctor. Always complete the full antibiotic course जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है. whatever dose and duration is prescribed to you, take the complete dose. Keep good personal hygiene. ठीक है, proper sanitation is important. And get vaccinated if there are vaccines available for any kind of disease you have fallen sick for. So वो चीज is like all of these things, all of these factors are equally important to make sure that antibiotic resistance is slowed down and completely eradicated. So yeah, so when we act responsibly, we protect ourselves, we protect the world, right? So thank you so much for watching. If you found this video informative, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. So yeah, we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care. Also, if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. We will meet in the next video. Till then, bye bye, take care. Thank you.